Very good morning, class 10th students. We know that you all are missing classroom teaching and learning and our interactions also. Many funny things were also happening in the class. We are also missing equally as you are missing. But what we can do? Anyhow, we have to continue the process of learning. Okay, so students, in the previous class we had studied about the structure of heart, right? I hope it is in the same page only. So you have seen four chambered heart and two atriums, two ventricles. One ventricle, this is connected through pulmonary artery to both the lungs and through pulmonary veins to left one, and from here aorta is sending the blood to whole body, and then finally it is divided into capillaries and coming back again. Valves we studied, here valves, and here also valves. So dear, what you have not done, that I am saying, sequence wise you have not written actually. For example, first point you should write. First point is impure blood from lower body part and upper body part is coming to right atrium. This is first point. Means description you should write, process of pumping the heart, pumping the blood by the heart. That you have not written, please write it. Point number two, from the right atrium, impure blood reach to right ventricle, and so on, like that, up to uh, 7 or here 8 step also you can mention. We have not mentioned. In this way, blood was pumping. Now we'll see today something next apart from this. It is connected itself. Okay, so our topic of today is double circulation, right? Double circulation, by name itself it is giving its meaning. Means circulation, it is taking place for two times. Okay, let us see how double circulation is taking place in our heart. And that also you should remember, double circulation is very important for the exam point of view. Okay, let us see. So heart, again cartoon like structure only will draw. Okay, so from here the blood was entering to the heart, right? So we can write is entry 1, right? First time blood enter into heart, same blood it reached here, and after reaching, the same blood is sent outside of the heart to lungs. So what it is? Exit 1. It was entry 1 to the heart, and now it is exit 1 to the heart. Now you know very well, same blood after purification, lungs purify. From both the lungs, after purification, same blood enters into the heart. Arrow you can remember. So what is now? Again it is entry. So you can write is entry number 2. Then again it is reaching to left ventricle, and from left ventricle, that also फिर से it is going out of the heart. So what is this now? It is exit 2. So same blood enters into the heart for 2 times and go away or go out of the heart for 2 times, and this kind of circulation is called as double circulation. Again I am saying, 2 times entry and 2 times exit. कौन सा blood? Same blood. This blood which came for purification entered first time, went outside, again entered, and then went outside. So same blood in the heart is taking entry for 2 times and going away from the heart for 2 times. That is called as double circulation. Okay, double circulation have some benefits.
ये आप लिखेंगे खुद, दैट आई विल चेक इन योर नोटबुक, राइट? Don't let just draw the diagram and leave it. No, whatever you are listening, whatever understand about this double circulation, you write in your words. Now benefits. The first benefit, you see, it was in pure blood. It is only in these right chamber. These are two right and these are two left. So this impure blood remain in the right chamber itself, right part of the heart, and pure blood remains in the. So you can write impure and pure what? Blood. So both pure and impure blood always remain, means separate from each other. So first it is oxygenated and non-oxygenated blood never get mixed, right? Now you should remember class 9th notes. uh, Warm blooded, do you remember? Warm blooded. Warm blooded animals are the animals whose body temperature remains constant. मतलब जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? इट रिमेन्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बाहर के इन्वायरमेंट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाट इज इट्स बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर के कारण हमारे बॉडी के सारे प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, राइट? और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारे बॉडी के जो भी प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूसली एक सेम पेस पर चलते रहेंगे, एंड इन द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी देयर विल बी नो इफेक्ट. ओके, सो human or four chambered animals, they can maintain their constant body temperature due to this, due to non mixing of pure and impure blood. So warm blooded condition, and it is very efficient, ये एनर्जी ज़्यादा देता है, राइट? So this was the double circulation. Okay, so I hope you have understood it, double circulation process, and for exam point of view it is asked many times. Okay. Now the next topic related to the heart itself, it is blood pressure, right? Again we can see this. So you remember which part is bigger, upper two parts or lower two parts? These lower two parts are bigger. These ventricles are actually bigger from atrium than atrium. So can you tell me who is actually pumping the blood? These two or these two? एक्चुअली दीज आर पंपिंग द ब्लड, बिकॉज यहाँ तो बिल्कुल ईजिली ब्लड आ रहा है, यहाँ पंप करने की ज़रूरत ही नहीं है. ईजिली ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम द लंग्स एंड फ्रॉम द होल बॉडी. बट जब पंप की ज़रूरत तब होती है जब आप डायरेक्शन से अपोजिट कहीं दूर चीज़ भेज रहे हो. तो हु इज़ सेंडिंग द ब्लड वेरी फार अवे? दीज टू. So whatever blood pressure is created or pressure is created in our body on the blood, it is due to the ventricles. Okay, so this blood pressure is, it is due to ventricles. Okay, ठीक है. That you also know that ventricles are in two conditions. They may be contracted or they may be relaxed. So let us see both the conditions, right? So condition number 1, ventricular contraction. ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम जरा डायग्राम से शो करेंगे. फॉर एग्जांपल दीज आर एट्रियम्स, बोथ द एट्रियम्स, राइट, एंड द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स प्रेशर इज क्रिएटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, और जैसे वो छोटे हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, ये इससे जाएगा लंग्स में और इसे जाएगा कहाँ? एओर्टा में. सो इन दिस कंडीशन प्रेशर इज क्रिएटेड इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सो वेरी मच प्रेशर, एंड दैट प्रेशर, और अच्छा इस कंडीशन को देखते हैं. दिस कंडीशन व्हेन ventricles are contracted, it is called as SYS
T-O-L-E, systole, or you can say ventricular systole or ventricular contraction. In this condition, maximum pressure is applied on the blood vessels. बहुत फोर्सफुली ब्लड जा रहा है तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उस वॉल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टोल प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर. एंड दैट सिस्टोलिक प्रेशर वैल्यू क्या है? वैल्यू इज 120 mm Hg. It is systolic blood pressure, right? Clear? सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? इट विल बी रिलैक्स्ड, फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे. तो हम उसे लिखेंगे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, राइट? Ventricular relaxation. So we can draw it again. Ventricles are relaxed in their normal shape. थोड़ा सा प्रेशर इसमें ज़रूर होता है उस समय एट्रियम में. एट्रियम्स आर समहाउ कॉन्ट्रैक्टेड बट वेंट्रिकल्स आर एट दैट टाइम relaxed. In this condition, when ventricles are relaxed in their normal shape, it is called as diastole. What is called as diastole? और किसका diastole? Ventricular diastole. तो जब ventricles relaxed हैं मतलब pumping का process नहीं हो रहा है. So pumping process नहीं हो रहा है, that means at that time blood vessels, जो blood vessels हैं, they will not feel too much pressure, right? And its value is nearly 80 mm Hg. 80 mm Hg. So it is systolic blood pressure, it is diastolic blood pressure. Systolic blood pressure is high, diastolic blood pressure is low because ventricles are relaxed, and here ventricles are contracted. Okay. One question is that is it this compulsory to same for all? No, it is average, right? This value is average of approximately 1000 people. So when we means take the blood pressure higher and lower, and then we take out the mean or average, so it is mean value. हो सकता है किसी का नॉर्मल 130 रहता हो हाईएस्ट, और किसी का नॉर्मल 90 रहता हो या 75 रह सकता है. इट मे वेरी, +-10 हो सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लेकिन ये बहुत ज़्यादा होगा देन इट इज़ डिफरेंट कंडीशन. ओके. So some people they are facing the problem of blood pressure, that is called as hypertension. Hypertension, इसको शॉर्ट में लिखेंगे बीपी. ब्लड प्रेशर कितना होता है जनरली? 120/80. जब भी आप डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो जनरली फर्स्ट ही फाइंड आउट व्हाट इज द ब्लड प्रेशर एंड ही राइट इन योर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट. जो भी आपका उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें लिखता है BP = 120/80 जनरली. बट हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर हाई कितना हो जाएगा? हो सकता है कितना हो जाए? 140/110 like that. So it is high blood pressure. It is a dangerous condition. It may create many damages inside our body. Our blood vessels may rupture inside the brain and clotting can take place. So means people are facing the problem of hypertension also. It may be due to the anxiety, या कोई टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा ही थिंकिंग हो रही है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या कई बार खाने पीने से भी इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है, राइट? सो इट इज़ ब्लड प्रेशर. But how we can measure? Now question is that how can we measure this blood pressure? So we can see here. Measurement of blood
pressure. So I think it's very common, almost all of you might have experienced कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक ऐसा कुछ मशीन देता है ना, यहाँ बुक में भी है आपको. Here you see, this is the instrument and procedure which measure the blood pressure, right? Okay. So this machine or this instrument by which we measure the blood pressure is called as sphygmomanometer. 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 ठीक है. तो ये तो आपको याद करने के लिए है स्फेग्मोमैनोमीटर. कई बार एग्जाम में पूछते हैं हमको व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर. दैट इज़ व्हाट स्फेग्मोमैनोमीटर. ओके. बट ये mmHg क्या है? व्हाट इज mmHg? राइट. सो इन दैट इंस्ट्रूमेंट यू माइट हैव ऑब्जर्व one column is there. With that column the things are connected and with one bob like structure ऐसे they are pushing and you are feeling the pressure. As you are feeling the pressure here in this glass column, mercury is filled. जैसे जैसे जितना प्रेशर आपको लगाते हैं उसी प्रेशर से मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता जाता है. और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं. दोज वैल्यूज़ आर इन मिलीमीटर. अब ये मर्क्यूरी कितना मिलीमीटर ऊपर चढ़ा है वही हमारा ब्लड प्रेशर को काउंट करता है. बिकॉज इट इज़ मर्क्यूरी Hg, सो दैट द यूनिट इज कितना और कौन? मर्क्यूरी. That's why the measurement is by the level raised in this column by the mercury. So it is mmHg. I hope you have understood. Okay, ठीक है. Clear? So shall we move to next one? Okay, ठीक है. And now we shall discuss about the already here it is there heart sound. आपको पता है हमारे हार्ट में साउंड आते हैं ना. डॉक्टर्स उसको लिसन कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. वन अनदर इंस्ट्रूमेंट इज़ देयर. विद द हेल्प ऑफ दैट डॉक्टर्स एग्जामिन द sound produced by the heart, right? Do you know what is its name? One instrument, that is stethoscope. Generally doctors अपने गले में लगा कर ही रखते हैं, right? So this is stethoscope. It is connected to ear and there is a thin membrane. It can give you the sound of heart. Okay, but why means when the heart sound is produced? Okay, this is the question. When heart sound is produced, so this heart sound is not due to beating. heart के beat से नहीं होता. it is due to valves. पहले तो ये याद रखना है आपको. it is due to valves. Now see here. When the blood is coming from here to here and here to here, these valves are opened, right? These valves are opened. So when these valves are opened, okay, there is no sound, right? But when these ventricles are contracting, then these valves are closed. These valves are closed. So the first sound, that is love. It is due to closure of valves between atrium and
वेंट्रिकल्स। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व्स हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होते हैं तो क्लोज होते हैं, और उनके क्लोज होने से जो साउंड आता है दैट साउंड इज कॉल्ड एज लब। ओके, ठीक है। नाउ ब्लड इज रीच टू हियर, रीच टू लंग्स, एंड फ्रॉम हियर रीच टू बॉडी। और जब रिलैक्स होंगे तो यहाँ भी दो वेल्व्स हैं, here two valves are there. So when they are relaxed, then they are closed. So second sound is coming, that is dub. That dub sound is due to closure of valves at the end of what is this pulmonary artery, and it is aorta. Pulmonary artery and aorta. Okay. So these two sounds इतना deep नहीं पूछेगा, but at least you should remember what is lub sound and what is dub sound. Main thing you should remember that these sounds are produced due to the closure of the valves. जो valves हैं हार्ट के, उनके बंद होने से ये sound आता है, right? Okay, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल मीन्स एक बार इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, इसका रिलैक्स रहना, फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, इसका रिलैक्स होना, फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये जो दो इवेंट्स हैं, इन दोनों इवेंट्स की जो बात है दैट इज़ कॉल्ड एज हार्ट साइकिल। ये भी हार्ट साइकिल को ही डिनोट कर रहा है। एक सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का जो गैप है, मतलब वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने, कॉन्ट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने में ये जो जो इवेंट हो रहे हैं पूरे, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट साइकिल। एंड दिस हार्ट साइकिल takes place means you can write systole, उसके बाद क्या आएगा डायस्टोल, और डायस्टोल के बाद फिर से क्या आएगा सिस्टोल, फिर डायस्टोल, फिर सिस्टोल। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट साइकिल एंड इट इज टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड टाइम फॉर ईच हार्ट साइकिल। आप इस 0.8 सेकेंड से अगर 60 सेकेंड को डिवाइड कर दो, मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 0.8, तो लगभग आपका आ जाएगा एवरेज हार्ट बीट्स। तो ये एवरेज जो है वो लगभग 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट इज़ द एवरेज हार्ट बीट ऑफ द पर्सन पर मिनट। ये वेरी कर सकता है, अगेन what I said that this blood pressure, it may vary because it is mean, it is also mean. 72 times is also a mean value, right? It's not means perfect for all, it may change. Clear? ठीक है। One last thing is remaining. You might have seen ECG. It is electrocardiogram, right? मतलब जब कभी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो चेस्ट में बहुत सारे बॉब्स लगा करके हम हार्ट के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। ओके, सो टू मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, टू मॉनिटर एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट। लेकिन कौन सी एक्टिविटीज़? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। इलेक्ट्रिकल, बिकॉज हमारा हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री मसल से बना है, कार्डिक इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि हमारे हार्ट के आसपास मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ्रंट पॉकेट में रखना एक डेंजरस चीज़ है, और जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तब तो और प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए जब आप करते हैं तो आपको कुछ ऐसा एक लाइन दिखती है,
ये एक है, it is one heart cycle. It is denoted by P, it is denoted by Q, it is denoted by R, it is denoted by S and T. P, Q, R, S, T. Okay, it is taking how much time? 0.8 सेकेंड. ये सबसे बिग पी कौन सी है? क्यू आर एस. ये पी वेव है, ये टी वेव है. उसके बाद फिर से पी शुरू हो जाएगा, फिर क्यू आर एस एक्सेट्रा. तो अगर ये वेव नॉर्मल आ रहा है किसी पेशेंट का, देन वी कैन से हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली, राइट. ये जो क्यू आर एस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इट इज शोइंग सिस्टोल. किसका? वेंट्रिकल्स का. अभी हमने देखा था ये सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, इट इज शोइंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल. तो अगर ये प्रॉपर आ रहा है, दैट मीन्स हार्ट ठीक से पंप कर रहा है. लेकिन अगर ये ब्लंट हो जाए, अगर ऐसा छोटा हो जाए, इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. सो डॉक्टर्स कैन फाइंड आउट ईजली द टाइप ऑफ प्रॉब्लम और abnormality in heart working with the help of this ECG. Okay, so here we have completed, dear students, about the human heart, and if anything is remaining, you can go through your textbook and you can ask. Okay, next we will see about the use of platelets. Clear? Okay. Okay, thank you. Take care.